In the very first question, they have explained that the wave is entering from a faster to a slower region. Whenever the wave is entering from faster to slower region, मैंने आपको कुछ पैरा पॉइंट्स बताए थे जो आपने याद रखने थे. फास्टर का मतलब क्या है? डीपर रीजन, डीपर टू शेलोर. एंड डीपर टू शेलोर जाते हुए स्पीड क्या होती है? डिक्रीज. एंड वेवलेंथ भी क्या करती है? डिक्रीज. अब हम लोगों ने क्या करना था? रिफ्लेक्शन को शो करना है. और हमने थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था? इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. ये पढ़े थे तीनों पॉइंट्स जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था. बस ये आपने ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है. बाकी डायग्राम्स को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर दूंगा. डू यू रिकॉल दीज पॉइंट्स और नॉट? हाँ जी, I recall these points. So the velocity is decreasing, the wavelength is decreasing, and the waves are moving towards normal. ठीक हो गया. अब जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, हम लोगों ने फर्स्ट थिंग आई आस्क माय स्टूडेंट्स टू redraw the wave fronts, the missing part of the wave fronts. These are the missing parts of the wave fronts. Okay. If this surface was not in front of it, these would have been the missing part of the waves. बिल्कुल straight lines. ठीक है. You do not need to keep these straight lines. It's only for the understanding. Once you'll understand कि कैसे आपने रीजन्स ड्रॉ करना है. ठीक हो गया. पहला काम आपने ये करना है. उसके बाद द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज you need to find out is it going from faster to slower region or the other way around. If it's going from faster to slower region, हमने क्या बोला है? It bends towards normal. ठीक है. So what would be the waves drawn like? It would be drawn like these. Wave B would be closer as compared to that of before. This distance A, and I'm clearing out these blue lines now. Okay. That was just for the understanding purpose. अच्छा. This A distance and this B distance क्या होना चाहिए? A should be greater than B. Wavelengths should be closer to each other. Okay. This phenomena is known as reflection. Reflection is defined as the bending of wave from its original part. ठीक है. It was going initially like, I'm drawing it with the green. It was initially going like this, but there come a difference of medium, so it bended towards the medium. Okay. Sometimes whenever we need to draw diagrams like this, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. नॉर्मल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था. इट्स द एंगल दैट द इंसिडेंट वेव मेक विद द सरफेस हमारे पास. ठीक है. एंड दिस इज लाइक दिस. एंड ओके. क्वेश्चन क्या था अब हमारे पास? लेट्स गो टू द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. ओके. ये मैं डायग्राम एक दोबारा भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. डीपर टू शैलो रीजन का मीनिंग समझ में आ गया आपको? और उसमें किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है आपने, वो भी अपने माइंड में रखना है. ओके. अब फर्स्ट क्वेश्चन उसने ये पूछा है, टेक मेजरमेंट फ्रॉम द स्केल डायग्राम
shown in figure 6.1 to determine the wavelength of the water as it travels into the in the faster region. अब wavelength क्या होता है हमारे पास? वेवलेंथ Distance between two wavefronts. ठीक है? This is the wavelength. मैं बाकी डायग्राम्स रेज कर देता हूँ क्योंकि हमें इनको रीड्रॉ करना है. आई वाज जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट. उसने हमसे जो डिटर्मिनेशन मांगी होगी हम लोग उसके अकॉर्डिंगली करेंगे उस टाइम के ऊपर. अच्छा जी. द बेस्ट वे इज कि हम डिस्टेंस में पहले नंबर ऑफ वेव्स काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक हो गया. दिस टोटल लेंथ वुड बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्केल. whatever the length would come out. ठीक है. उसने हमें बोला है कि 1 centimeter is equal to 4 centimeter. Supposedly this length came out to be let's say 3 centimeter. Okay, just supposedly कि हमारी यहाँ से यहाँ तक. I do not have the scale with me right now, neither you have it. So यहाँ से यहाँ तक का distance हम लोगों ने measure कर लेना है. Okay, and supposedly this came out to be 3 centimeter, but this 3 centimeter is the distance of 6 waves. ठीक है. So we'll divide it with 6 force to find out the wavelength of one wavelength. So 3 divided by 6, supposedly it came out to be 0.5 centimeter is the wavelength. Okay. और उसमें हमें बताया हुआ 0.1 centimeter is equals to 4 centimeter. 0.5 centimeter into 4 would give us a value of 2. Did you get the point? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टोटल डिस्टेंस मेजर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. सपोजिटली दिस केम आउट टू बी 3 centimeter. अब हमने ये मेजर, अब ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है ना, हमने उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स कर देना है. नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6. सो आई डिवाइडेड दिस लेंथ ए विद number of wavefronts. I got the wavelength of 1. I got the wavelength out of it. ठीक है. Which according to these values was 0.5 centimeter. Then they have given us the scale that 1 centimeter represents 4 centimeter. So I multiplied 0.5 with 4 to get the wavelength of wavefronts. Okay. So we'll write 2 centimeter here. Am I clear about this question? और कुछ भी समझ में नहीं आया? ये समझ आ गया कि वेवलेंथ कैसे निकालनी है, लेकिन ये जो लास्ट वाला पार्ट है हमने वो उससे नीचे स्केल 4 दिया हुआ से जैसे आप लोग मल्टीप्लाई बायो किया, में फोर करते हो ना. कहाँ? बायो में जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हो ना, वो करने के लिए मैग्निफिकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, हाँ जी. है ना. उसी तरीके से अब उसने 1 सेंटीमीटर कहा है कि इट इज रिप्रेजेंटिंग 4 सेंटीमीटर. सो हमने बेसिकली उनको जो हमारे पास लेंथ निकली थी वो सेंटीमीटर्स में थी एंड 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 4 सेंटीमीटर. तो हमने बस उसके हिसाब से उसको रीड्रॉ कर दिया. ठीक है. सपोजिटली यहाँ पे उसने लिखा होता है कि 5 सेंटीमीटर है हमारे पास. 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 5 सेंटीमीटर. तो उसने वैल्यू क्या कहते हैं उसको, अप टू स्केल बनाने के लिए उसने हमें बस ये डायग्राम इस तरह करते हैं नॉर्मली हम लोग ना, शॉर्ट करते हैं इसको.
These are the magnification diagrams. Do not the magnification diagram will say. These are the diagrams that we normally up to वो फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए ना we take help like this. स्केल्स ड्रॉ करते हैं हम लोग ताकि विद इन द पेज वो चीज ड्रॉ हो सके. कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन? हाँ जी। नेक्स्ट में से बोला है कि द स्पीड ऑफ द वेव इन द फास्ट रीजन 0.39 सेंटीमीटर सॉरी मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? v इज इक्वल्स टू f lambda. We needed frequency. It's v over lambda. v is given as 0.39 meters per second और हमारे पास wavelength कितनी निकली थी? 2 centimeter, which is 2 into 10 raised to the power minus 2 meters. Cause यहाँ पे meters per second में तो हमें उसके units को convert करना पड़ेगा. ठीक है? Can we go to the next part? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि on figure indicates that पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट्स इन द स्लोअर रीजन. हमें स्लोअर रीजन के अंदर वेव फ्रंट्स जो हैं वो ड्रॉ करके देने थे. मैंने आपको टेक्निक क्या बताई? द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज कि सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है? एंड लाइक दिस. अब मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ. आई विश आई वुड हैव. Give me a second. Copy me. Let me copy this image to the paint so that I can draw a better image so that you can understand it. अच्छा, so far अभी तक हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी है कि whenever the wave is entering from deeper to a shallow region उसकी speed decrease होगी, and when the speed decreases, so its wavelength. Okay? अच्छा, अब ये इमेज था हमारा. मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया. Just give me a second. I'm just putting this in paint. It looks okay. Can you see the screen now? सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि whenever you'll get a diagram like this, सबसे पहले आपने क्या करना है? रीजन्स देखने के फर्स्ट कौन सा पहले है। हाँ जी. एंड आपने उन वेव फ्रंट्स को क्या कर लेना है? स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है. जस्ट टू सी कि what would be the wave fronts look like if there was no boundary in front of it. ठीक है? This helps you out to draw the better image or diagram. And this. ये बात समझ में आ गई? I have drawn these straight wave fronts. उसके बाद देखने के the लिए कि second वो task. किस डायरेक्शन हाँ कि if there नॉर्मली was if there was देखेंगे। हाँ if there was nothing in front of it तो क्या होना था? Then हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए अब देखो डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल हमारे पास क्या था. मैं उसको एरो से ड्रॉ करता हूँ. इफ आई कुड सी द एरो हियर. उन्होंने अभी इस टाइम हमें मूवमेंट नहीं दी हुई बट बहरहाल व्हेनेवर अ डायग्राम इज गिवन लाइक दिस तो हमने उसमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है. ठीक है? फॉर ईच ये आपके नॉर्मल्स आ गए वेव फ्रंट्स के. 90 डिग्रीज डी को रख के 90 डिग्रीज एंगल बना देना है. येलो सही से नजर आ रही है? कोई और कलर यूज कर लूं? मैंने येलो इसलिए यूज किया है आ रही है। ताकि थोड़ा क्लियर नजर आ जाए. ये हमारे पास आ गए येलो शेड के अंदर नॉर्मल ऑफ ईच सरफेस. ठीक हो गया? अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद
हमारे पास मैंने आपसे क्या कहा था कि हमेशा टूवर्ड्स द मीडियम जो है वेव्स बाइंड होती हैं, ठीक है। सो now the waves would go like each wavefront would go like this and it would be closer to each other than that of before. इसी के साथ मैं आपको shallow to deeper region भी शो कर दूंगा। Sorry, इसने थोड़ा सा इधर जाके ड्रॉ होना। Did you get the wavefronts now? अगर इसका ऑपोजिट होता तो हमारे वेवफ्रंट्स कैसे ड्रॉ होने थे बेटे? अच्छा, अभी फिलहाल इसके ऊपर बात कर लेते हैं। समझ में आ गया कि whenever it's going from faster to slower region, it bend towards normal, towards the medium, towards the surface. ये येलो वाला जो है ये क्या है? These are normal. These are normal. D को रख के हम लोगों ने, D को ऐसे रखना है हम लोगों ने, ऐसे। We would put D like this here and would draw the 90-degree angles with the incident waves. तो फिर ये जो इन्होंने स्ट्रेट लाइंस दी है इनका क्या है? फिर वो डी से क्यों नहीं ये तो ड्रॉ की उन्होंने? ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया था कि अगर सामने कोई मीडियम नहीं होता, दे वुड हैव गॉन एग्जैक्टली स्ट्रेट विदाउट एनी चेंज इन देयर शेप। सो ब्लैक लाइन जो मैंने एक्सटेंड की है, दीज वर द एक्चुअल वेव फ्रंट्स इफ देयर वाज नो चेंज ऑफ मीडियम। One thing that you need to keep in your mind is whenever we're talking about the क्या कहते हैं उस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, वेव प्रॉपर्टीज को बात कर रहे होते हैं, तो स्पीड एंड वेवलेंथ हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ओनली इफ फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट व्हाइल डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। सो से अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा है व्हाट वुड हैपन टू द फ्रीक्वेंसी, सो सिंपली विल से इट वुड रिमेन अनचेंज्ड। During the study of properties of waves, the frequency is normally kept constant. So it's not changed during the section. Next question में उससे पूछा है what is meant by frequency? Frequency को कैसे define करते हैं? Number of waves per unit time. Amplitude हमारे पास क्या होता है? हमने डिस्कस किया था maximum displacement of wave. ओके हो गया। नेक्स्ट में उसने हमें अब रिफ्लेक्शन पूछी हुई है कि हाउ टू डू द रिफ्लेक्शन पार्ट। अब मैं पहली डायग्राम को कॉपी करके उधर पेस्ट कर देता हूँ सो दैट हम लोग जब उसको डिस्कस करें तो हमारे पास ओके। अब आ जाते हैं वापस इसमें। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय कंप्रेशन। यू नो द डेफिनेशन। व्हाट इज मेंट बाय कंप्रेशन? कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन वी हैव स्टडीड। हरी अप हरी अप। कंप्रेशन तो ऊपर, कंप्रेशन ऊपर वाला पार्ट। कंप्रेशन होता है जो कंप्रेस्ड होता है, जिसके अंदर वेवलेंथ यस, कंप्रेस्ड होती है, और वेव फ्रैक्शन के compressed अंदर खुली part of होती the है। wave, या हम इसको we also say this as high density area of the wave. Since it's a 1 marks question, either would justify the answer. Next में उससे पूछा हुआ है if the distance from point P to Q is 8.5, it takes 25 milliseconds for the compression at P to reach at Q. Find for this sound wave, determine the wavelength. It's exactly the same question that we have done before, but this time it has given us the value. अब उसने 8.5 दी हुई from P to Q. हम कैसे find out करेंगे एक wavelength को? हमने अभी डिस्कस किया कि टोटल लेंथ को नंबर ऑफ वेव फ्रंट से डिवाइड कर देते हैं, तो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 and 5. We'll divide 8.5 with 5 to find out the wavelength. 8.5 divided by 5 would give us an answer of 1.7 meters. That is wavelength is 1.7 meter. अब उसने हमें 25 milliseconds for the compression to reach at T. What is time? Total time दिया हुआ है, but हमें सिंगल वेव का टाइम निकालना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बल्कि नहीं, उसने हमें अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हो?
फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कैलकुलेट करने को बोला है। हाँ, सो हमने अभी भी नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स काउंट किए हैं फ्रॉम पी टू क्यू, कितने बन रहे हैं? पी टू क्यू कितने वेव फ्रंट्स बन रहे थे हमारे पास? 5। ठीक है। तो हमने अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है एक वेव की, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रीक्वेंसी वैसे किसके इक्वल होती है? 1/टाइम पीरियड के। लेकिन उसने टाइम पीरियड हमें कितनी वेव्स का दिया हुआ है? 5 वेव्स का। तो 5/25 इंटू, अगर उसने हमें सिंगल वेव का दिया होता तो हम लोग ऊपर कुछ भी ना लिखते, जस्ट 1 ही रहता। इफ देयर आर मोर देन 1 नंबर ऑफ वेव्स तो हम उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू n/टाइम पीरियड। इफ नंबर ऑफ वेव इज 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इफ नंबर ऑफ वेव्स आर ग्रेटर तो फिर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट हो जाएगी। Am I clear? Can I move to the next one? आगे चलें बेटा। हाँ जी। I'm skipping the part C for now. The loudspeaker is immersed in water where it continues to produce sound of the same frequency. State and explain how the wavelength of the sound wave in water compared determined in B1. वाटर के अंदर साउंड क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? साउंड की वाटर स्पीड, के अंदर सॉरी। साउंड डिक्रीज होगी। डिक्रीज। हमने स्पीड ऑफ साउंड्स पढ़े थे, सबसे ज्यादा किस में होती है? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सॉलिड में होती थी, देन लिक्विड, देन गैस में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स आर मोस्ट डेंस, सो द स्पीड वुड बी फास्टेस्ट इन सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। सो अगर एयर टू वाटर जा रही है तो स्पीड वुड इंक्रीज, एंड डिक्रीज। सो is the wavelength. Next question is how longitudinal differs from longitudinal waves differs from transverse wave. तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ? Then they have asked to find out the difference between longitudinal and transverse waves. So what is the difference between longitudinal? Longitudinal waves travel in the form of compression and rarefaction and motion of particle is parallel to the propagation of wave. नेक्स्ट उसने हमें कहा है हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी इन सॉलिड, उसकी सॉरी वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 7.5 और स्पीड उसने हमें दी है 61 मिली सेकेंड मीटर्स पर सेकेंड। सो v is equals to f lambda and lambda is equals to v over f. V is given as 6100 and 7.5 किलो हर्ट्ज दिया, तो किलो की जगह 10⁻³ सही हो क्या बेटा? तो इसको हम डिवाइड करेंगे, विल गेट द आंसर ऑफ will get 0.81 meters. नेक्स्ट उसने हमसे पूछा हुआ है the sound waves passing from end of the beam into air, solid to air enter हो रही है, state the effect of on the speed of sound. What would be the effect on speed of sound if it's entering from solid to air? डिक्रीज होगी। Decrease. सॉलिड के अंदर ज्यादा डेंस पार्टिकल्स होते हैं, तो सॉलिड के अंदर तो Opposite, उल्टा बोल रही हूँ। And we know that the wave speed and wavelength is proportional if frequency is constant. तो अगर speed decrease हो रही है तो wavelength भी क्या करेगी? It would decrease as well. Am I clear?
Acha, we skipped one question. Sorry, we skipped one part in the previous question, so I'm going to explain. This is related to reflection. Reflection का हम लोगों ने क्या points याद किए थे कि whenever we are discussing about reflection, तो which parameters do we need to keep in mind? No change of media, change of medium. Hence, speed, wavelength, and frequency remains unchanged. And angle of incidence is equals to angle of reflection. Now, how do we draw these points now? सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो ये लाइन उन्होंने दी होती है इसको स्ट्रेट बिल्कुल ड्रॉ कर लेना होता है up till it touches the बाउंड्री। ठीक हो गया? इससे बाउंड्री को यहाँ पे टच किया। जिस पॉइंट पे वो आके बाउंड्री को टच करेगी हमने एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर डी को रखना है। सॉरी, we'll put the D here, like I'm using the circle to represent D। हमने D को रखना है such that जो D का 90 वाला पॉइंट होता है ना, D तो आप सब लोगों ने देखी हुई है ना, D का जो 90 का एंगल होगा, 90 वाला जो लाइन होगी, it should put exactly like here. Let me show if I can get the diagram of it and I'll put that here. I don't know why it's acting like this. Protector. From और इसमें रोटेट की ऑप्शन नहीं आ रही। से ये इजीली रोटेट हो जाता है, अब रोटेट नहीं हो रहा। uh, let me try if I can get it here. अच्छा, I couldn't get that D part possible. Anyhow, we'll put the D here and we'll draw the normal like this, and we have to make sure that we need to measure this angle. Whatever this angle ही उसी angle के ऊपर हम लोग जो है, for example it came out to be 30 degrees, तो हमने 30 degrees का ही angle दूसरी side पे बना देना है, like this. As we told कि incident angle is equals to reflected angle. तो वो अगर 30 डिग्रीज हमारे पास इंसिडेंट का बन रहा है तो 30 डिग्रीज ही हमारे पास रिफ्लेक्टेड बनेगा। सबसे पहला काम आपने ये कर देना है। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसके लिए जो दिया वो मैंडेटरी है। हाँ, जैसे आपके पास यूं मीडियम पड़ा हुआ है ना, और आपके पास यूं वेव आ रही है, ठीक है, आपने डी का जो 90 का पॉइंट होगा बिल्कुल सेंटर पॉइंट, उसको आपने इसके साथ टच करना है और फिर 90 का एंगल ड्रॉ करना है, एंड यू विल फाइंड आउट दैट इंसिडेंट। और फिर फॉर एग्जांपल ये अगर 20 डिग्रीज है, 20 डिग्रीज का ये एंगल आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। दिस एंगल शुड ऑल्सो बी 20 डिग्रीज। ओके, हाँ जी। इसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड वेव्स ड्रॉ कर देनी है। फॉर रिफ्लेक्टेड वेव्स, अब हमारे पास इंसिडेंट वेव्स ये थी तो उनकी रिफ्लेक्टेड वेव्स ऐसे बन जाएंगी।
वेवलेंथ का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होता है, हम्म और लैम्डा क्या होता है? wavelength. These are the लैम्डा का reflected wave fronts. ठीक हो गया? अब again, one thing that we need to keep in our mind is के this distance A and this distance B should be equal to each other. Change in wavelength नहीं आता. अब मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि how would we know ये pink वाले wavefronts, these are showing the reflected wavefronts. How we know how to draw the reflected wavefronts. मैं आपको एक wavefront साइड पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. That basically हमने ये जो पिंक वाले wavefronts हैं इनको किन बेसिस पे ड्रॉ किया. ठीक है? सपोज ये मेरे पास वो बाउंड्री थी जो उन्होंने हमें ड्रॉ करके दी हुई है. एंड अब हम लोगों ने ये मेरे पास वो वेव फ्रंट आ गया. ठीक हो गया? अगेन हमने यहाँ पे डी रख के एज आई शोड यू जैसे अभी हमने बनाया था ना, यहाँ पे डी रखेंगे. दिस वुड विल मेजर दिस एंगल वट एवर द एंगल इज. उसी एंगल की बेसिस पे हम लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल इट केम आउट टू बी 20, हम ये वाला एंगल भी 20 ड्रॉ कर देंगे और फिर ऐसे वेव फ्रंट्स उनके. और अगर एक वेव फ्रंट हमने ड्रॉ कर दिया ना, बाकी सारे उसके पैरेलल बनेंगे. ठीक है? तो वेवलेंथ का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होता है. लैम्डा इज वेवलेंथ. और स्पीड, सॉरी. मरियम, डिड यू अंडरस्टैंड? फातिमा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट और शुड आई रीड्रॉ इट कि हमने ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स कैसे ड्रॉ करने हैं? Redraw. I didn't सॉरी, understand. I बिकॉज यू वर बिजी टॉकिंग did टू not समवन. बिकॉज यू वर बिजी understand. टॉकिंग टू समवन. जब भी हम लोगों ने रिफ्लेक्शंस ड्रॉ करनी है, वी नीड टू पैरामीटर्स. पहला पैरामीटर कि इंसिडेंट वेव किस कलर में आ रही है हमारे पास, सॉरी इसकी डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है. जैसे हमारे पास डायरेक्शन ये थी, सबसे पहले हम लोग विद द हेल्प ऑफ डी, दिस इज रिफ्लेक्शन. ठीक है? डायरेक्शन ऑफ वेव. मैं एक डायग्राम को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ. दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव. विल पुट द डी हेयर एंड वी विल ड्रॉ द 90 डिग्री एंगल normal. ठीक है? We'll find this angle, whatever the value it would be. This angle. Suppose this angle is 30. When we put D here, हम 30 का ही एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे. ये मैंने 30 का एंगल ड्रॉ कर दिया. अब इस पे भी हम एरोहेड बना देंगे एंड दिस वुड शो द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव. ठीक है? अब हम ड्रॉ करेंगे वेव फ्रंट, जो कि क्वेश्चन में उसने हमें ड्रॉ करके दिए हुए थे. वेव फ्रंट वॉज लाइक दिस. हमने वेव फ्रंट के साथ भी एग्जैक्टली यही करना है कि जिस पॉइंट पे आके वो बाउंड्री को टच कर रहा होगा, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे हम लोगों ने डी को रखना है अगेन, सच दैट वी कुड ड्रॉ द 90 डिग्री एंगल विद द surface. Supposedly the 90 degree angle with came out this. ठीक है? अब अगेन विद द surface कहां से हम एंगल मेजर करेंगे? दिस वुड बी द एंगल. सपोज इट केम आउट टू बी 40 डिग्री. तो हमने यहाँ पे भी क्या करना है? 40 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है. एंड हम लोग जब 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, हम रिफ्लेक्टेड वेव को रीड्रॉ कर देंगे. दिस इज द 40 डिग्री. जब एक वेव ड्रॉ हो जाएगी, रिमेनिंग वेव्स को हमने बस उसको सिंपली उसके पैरेलल ड्रॉ कर देना है. जब भी रिफ्लेक्टेड वेव्स की डायग्राम्स आएंगी, वी हैव टू मेक श्योर कि इसके टू सेक्शंस होते हैं. एक पहला हमने डायरेक्शन ऑफ वेव के अकॉर्डिंगली डायग्राम ड्रॉ करके देनी होती है, एंड फिर हम लोगों ने वेव फ्रंट्स की रिफ्लेक्शंस को शो करना होता है. ठीक है? हाँ जी. थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हाँ जी. ओके.
Now let's do the last part of the question. It's again the reflections. The question was of reflection. We skipped it for the being. अब देखो इसको आप let me copy this diagram. Like ये exactly वही diagram है, बस उसका पैरामीटर चेंज किया हुआ है. अगर मैं इसको रोटेट करूं उस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है? इट वाज लाइक दिस. अगर मैं इसको रोटेट कर दूं लाइक देयर वाज अ रोटेट साइन. I just saw the rotation sign. It was somewhere like here. हाँ rotate. देखो अब जो उसने हमें डायग्राम ड्रॉ करके दी हुई है यहाँ पे ये वाली, इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस डायग्राम, सिर्फ हमने उसको रोटेट कर दिया. ठीक है. जो सारे पैरामीटर्स हमने इसमें अप्लाई किए थे वही सारे पैरामीटर्स विल अप्लाई ऑन दिस डायग्राम. अब दिस इज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. अब वो अब डीप से शैलो में जा रही है. डीप से शैलो में हम लोगों ने एक डायग्राम पहले ही ड्रॉ की थी, फास्टर टू स्लोअर रीजन में. ठीक है. अगर मैं इस पेज को भी रोटेट करूं, बल्कि नहीं सॉरी, वी ड्रॉ द डायग्राम है. ठीक है. अब इसमें इफ आई कुड रोटेट इट, एक रोटेशन और देनी पड़ेगी. हाँ ऐसे हो गया अभी. ठीक है. अब वो इसने ये डायग्राम ऐसे बनाया जैसे हमने. अब देखो एग्जैक्टली उस डायग्राम को रोटेट किया तो देखो ये वही वाली शेप बन गई जो उसने क्वेश्चन में दी हुई है. वुड यू एबल टू ड्रॉ द डायग्राम नाउ? आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट कि कैसे ड्रॉ करना था उसको. अब मैं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? वी वुड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ये लाइन स्ट्रेट लेके जाएंगे. लेट मी कॉपी दिस डायग्राम इनटू द पेंट. अगेन ये एग्जैक्ट वही डायग्राम है. सबसे पहले हम लोगों ने, इट्स गोइंग फ्रॉम डीप टू शैलो रीजन. ये हमारे पास इट्स टचिंग द बाउंड्री. एंड सेकंड मैंने आपको क्या पैरामीटर बताया था कि ऑलवेज ड्रॉ द वेव फ्रंट्स, उनकी पूरी लोकेशन ड्रॉ कर दो एग्जैक्ट स्ट्रेट. स्ट्रेट होते तो उन्होंने ऐसे जाना था. दीज आर, इस तरह ना क्वेश्चंस में एक्यूरेसीज आ जाती हैं. अब इन वेव फ्रंट्स को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करोगे ना, यू वुड नो द आइडिया कि मैंने अब इसके अबव वेव फ्रंट ड्रॉ करना है. मतलब वो इस वेव फ्रंट जो आपने न्यू वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, इट वुड गो फ्रॉम टुवर्ड्स द मीडियम जाना है या उसने अवे मीडियम जाना है. तो अब डीप टू शैलो जा रहा है तो टुवर्ड्स द मीडियम बेंड होगा या अवे फ्रॉम द मीडियम बेंड होगा? बताइए. अवे टुवर्ड्स फ्रॉम द मीडियम मीडियम. जाएगा. डीप टू शैलो जा रहा है फातिमा. टुवर्ड्स द मीडियम बेंडिंग होगी. ठीक है. सो टुवर्ड्स द मीडियम कैसे बेंड होंगे? वेव्स ऐसे. पहला वेव,
दूसरा वेव, तीसरा वेव एंड चौथा वेव टुवर्ड्स द मीडियम जा रहा है। ठीक है, this would be the diagram for this one, and you could see clearly that I have taken care कि this distance A and this distance B, A is greater than B because shallow region में wavelength decreases because speed decreases. Okay, इस क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग टेम्परेचर बताया ही नहीं गया ऑर्डर में। are we clear about this diagram now? हाँ जी। That is it for today. On the next part, they have asked to name the process that occurs as wavefronts passes from deep to shallow region. So that would be known as friction. If there was a slit or any opening present, then we would have written diffraction. In this figure, they have asked us to complete the diagram that we already have discussed and completed. Moving on to the next one, explain why the wave shown in figure 7.2 is described as a transverse wave. Because the particle motion and propagation of wave is perpendicular to each other. How do we know the particle is moving perpendicularly? Because we have discussed that the particle would not leave its position, but it would go up and down. So obviously, if the particle was moving like this, that is the reason we are getting this shape in the form of crust. In the next part, they have asked the speed of the wave along the rock is 3.2. Calculate the frequency of the waves. In order to get the frequency of the wave, what do we need to do first is to find out the wavelength. In order to find out the wavelength, we need to calculate the number of waves that we see here. So the total, how many waves do we have here? Let me use another color for this. It is starting from here and ends here 1 and 2. So we need to divide 2.4 divided by 2. Why have we divided? Because its one wavelength is from here to here. So we have two waves inside. So in order to find the wavelength, we need to divide it with 2. That would be 1.2 meters. Now we have everything. Frequency is equals to V over lambda 3.2 divided by 1.2. We'll get speed and wavelength. 3.2 divided by 1 by 2. This would give a frequency of 2.7. Next question is, okay. I'm not reading the whole question. Let's just jump to the question that they have asked. Sometime later, the wavefront has moved into region Q. Okay. CD, C, and CF are suggested position of the new wavefront. State which is the correct position of the new wavefront. They have told us that the water is shallow and the waves travel slowly in Q region. So we know whenever the waves enter from a deeper to a shallow region, it moves towards the medium. So out of all these three, which one is moving towards the medium? CD. The speed is decreasing, the wavelength would decrease as well. So CD, and reason they already have given us in the question, because due to decrease in speed, the wavefront bends towards the normal or towards the boundary. You could go for anything. Since it is a 2 marks question, 2 to 3 marks questions, because the total marks of both is 4 marks, we'll go for further details into that.
For that, we can go for that's right. Wavefront would change direction due entering into shallower beach. I think so that would justify the answer. Or we can further write K. A would move to point C and B would move to point D. So in the same time, A moves to point C and B to D. I've given you enough that right your answer. In the next question, they have said the wave changes position AB in region B now moves to position CG in region Q. We can clearly see that there is no change of they are exactly parallel to each other. There is no bending towards or away from the normal. So we could see that there is no change. The reason would be the medium P and Q have same depths. That is why there is no change in the direction of wavefront. There is no bending and float. Moving on to the next one. Long rope fixed at one end is being used by a student to demonstrate transverse wave. State which student, what the student does to rope to produce transverse wave. It would shake the rope up and down in order to produce the transverse wave. Figure 6.1 shows a section of the rope where the transverse wave is present. We need to label wavelength and we need to label the amplitude. So the wavefront wavelength could be from here to here. Choice is yours, or either from this to this. And amplitude would be this. Half of this is the amplitude. Always keep this in your mind. Okay, we need to draw the equilibrium line. This, if you take this whole length, we need to divide it by 2 in order to find the amplitude. Because amplitude is always from the mean position to the extreme position. So just what the student could do to reduce the wavelength of the wave, it could increase the frequency of oscillations. Or in other way, increase the speed of movement. This would be more accurate. You could go for either answer. Now they have given us a diagram. Explain how the diagram shows the water travels more slowly in scheduled region because it is bending towards normal. It is showing that the wave fronts are bending towards normal. Also, the wavelength is less in shallow region, hence speed would reduce. Because we need to justify it with the diagram. So whatever is clear for from the diagram, we would use those points to justify our answer.
So you could clearly see that it is bending towards the normal and the wavelength is smaller here as compared to wavelength here. That's how we would do the answer. Moving on to the next one, they have asked us, state how figure 6.1 would change if the sound has a higher frequency. Higher frequency means wavelength smaller. So the compression and rarefaction would come closer together. Compressions and rarefactions would come closer together. If the sound was louder, which means we would have the greater amplitude, and when the amplitude increases, the compressions would get more close and rarefaction would go further apart, showing increase in the amplitude. Or you can add a point, narrower compressions and wider rarefaction. On figure 6.1, draw a line marked with arrows at each end to show the wavelength. I have explained in the previous lesson. Let me bring it closer. That one thing that we need to make sure is from the line which we will start, we will need to end exactly at that line to make one wavelength. So if I'm starting with this line, the very first line, I would exactly ends at this line. This is what same goes for compressions. So I'm starting with this line. So 1, 2, 3, 4, यहाँ से भी 1, 2, 3 and fourth line पे जाके I have to end that show one wavelength. In compression and rarefaction, we need to take care of this part. Next, we have again deep to shallow. We could clearly see the wavelength is smaller, and since the boundary was parallel to the wavefronts, so that is the only thing that we can see. We can say that the wavelength is smaller. What happens at the boundary, if anything to the frequency, we have discussed that when we are discussing the wave properties, the frequency remains constant. The speed would decrease. And if the speed is decreasing, so is the wavelength. Sorry, decrease. Because v equals to f lambda, if f is constant, v is directly proportional to lambda. Sorry. Moving on to the next one. Wait now. The speed, the wave has a speed of 0.12 meters per second in deep water. Waves crust are 0.8 meters apart in deep water. Calculate the frequency of the wave, state the equations that you use. We know that it's v equals to f lambda. We have speed, we have wavelength, and we need to calculate frequency. 0.12 divided by 0.08. This would give us a really good point. 1.5. Always write your answer right in the space given. If you will not write your answer in the space given and you have not written the units alongside with it, your marks will be deducted. We have seen this diagram so many times. We just add this type of diagram in the question. We just need to copy this diagram right over here to show the, so it would go something like
shallower region, then say the distance between the wavelengths should be smaller. Let me copy that and paste here so that we would have a neat version of the diagram, not my version of. Although we have a diagram like this, but we would anyhow go with this. If I could paste that. Let me open the document in the other file. Then I will be paste that in the take you to that document. We paste that. Just try to make a neat diagram. It's not exactly the same, but it would look exactly like this. Since they have shown us the direction of the wave, so the only thing that we need to add here is to show the direction alongside with it. So for that, we're going to just draw the arrow. It's like this. Okay. The incident direction, reflected direction for reflected direction for. Why is it moving? I need to draw them. Stop moving. A very slight bending we need to show. Because this would be normal. Let me draw. So on top of it, this is the normal. And so I should draw a line here. This would be. This is incident. Yeah. This is. We have studied that incident angle would be greater than reflected angle when it comes to entering into shallow area. That's it.